relative density of a substance tells us about that the given substance is heavier than the equal volume of water. Relative density tells us about the substance that how much heavier than the equal volume of water. Volume to mention कीजिए. Equal volume of. Yes or no, beta? Yes. Yes. For example, if I ask that, first example, if the relative density of silver is 10.5. What does it mean? It means the silver is 10.5 times heavier than the equal volume of water. Yes, sir. Yes, beta. So how we can write density of silver is equal to, यहाँ पर क्या होगा, relative density होगा. Relative density of silver is equal to density of silver divided by density of water. Yes or no? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, density of silver जो होगी वो क्या होगी, 10.5 times of the density of water. Yes or no? Yes. Yes, and डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास अगर इक्वल वॉल्यूम दोनों का लेते हैं बेटा, सिल्वर का इक्वल वॉल्यूम और वाटर का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, मींस टू से द सिल्वर विल बी मच हेवियर देन द वाटर. एंड हाउ मच टाइम इट विल बी, 10.5 times heavier than the water. Buoyancy and buoyant force. Buoyancy and buoyant force. See what happens when any object on or any body is immersed inside the liquid. Any object or body is immersed inside a liquid, then the liquid exerts a force which is perpendicular to the surface of the body. Surface of the body means to say, what we have, suppose we have like a container yes, in which water is filled like this. Okay, so when a body is immersed inside the liquid, और ये आपने कैसे किया बेटा, आपने क्या किया, किसी थंब से या तो अपने थंब से उसमें क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. हाँ या ना, फोर्स अप्लाई करोगे, when a force is applied on it by the thumb, then it is placed inside the liquid. When we remove the force on the block, we can consider a block, then what will happen, it will rises up. Yes or no? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे ही आप इसको फोर्स को रिमूव करोगे तो ये क्या करेगा, सरफेस पर आ जाएगा. हाँ या ना, तो सरफेस पर आने के बाद में क्या होगा, ये यहीं पर फ्लोट करता रहेगा. यस, अब मुझे बताइए यहाँ पर ऐसा कौन सा रीजन होगा बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट द ग्लोब will float on the liquid? What is the reason behind this? Because
the water exert a pressure in upward direction. Upward direction. Upward direction. That is called Buoyant force. buoyant force, and which is due to the upthrust. नाम सुना है बेटा? पढ़ा है हमने? Yes. है ना? पढ़ा है ना? तो यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा? लिक्विड उस पर अपथ्रस्ट लगा रहा है, उसी की वजह से ये क्या करेगा बेटा? फ्लोट करेगा और ये लिक्विड की सरफेस पर आ जाएगा. And that is called the buoyancy. Means to say the tendency of a liquid to exert an upward force on an object placed inside the water or in the water is called the buoyancy, and the force which is exerted by the water on the body in upward direction is called the buoyant force. Yes or no, beta? Yes. 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 So first note it down. Buoyancy. How we define the buoyancy? How we define the buoyancy? The tendency for body to float on water is called buoyancy. No, the tendency of the body float on the water is not called buoyancy. The tendency of liquid to exert Force in upward direction. to exert an upward force. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? To exert a force in upward direction when object is placed in the liquid. Is called buoyancy. Yes or no? And the force which is exerted by the liquid is called Buoyant force, which is due to the upthrust applied by the liquid on the body. So how we define the buoyant force? Buoyant force. See, when an object is immersed in a liquid, then it experiences, what happens? It experiences a force in upward direction. Yes or no? A force in upward direction. This upward force is called buoyant force. buoyant force. This upward force is called buoyant force, and buoyant force is always at this buoyant force. This buoyant force due to the upthrust due to the liquid. Yes or no? buoyant force क्यों होता है बेटा? Because जो liquid होता है हमारे पास वो upward direction में एक upthrust apply करेगा. So we can say यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा? buoyant force is equal to upthrust बोल सकते हैं बेटा? Sir, upon volume of upthrust बोल सकते हैं. एंड ये buoyant force की वजह से क्या होगा बेटा? जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए.
प्रेशर कम होगा। सर वेट कम कम हो होगा, जाएगा। कम होगा, तो सर फिर क्या कम। बोला बोल सकते हैं बेटा, लॉस ऑफ वेट. Let's start the factors affecting the band force, and first factor is volume of the volume or size of the object. The band force, the band force is directly proportional to the density, directly proportional to the density, directly proportional to the volume or size of the body, size of the object लिख लो ना, body is the object लिख सकते हैं ना, immersed in the liquid. Yes. So what we can say, band force is directly proportional to the वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. volume of object. Don't worry बेटा, इसको हम प्रूफ करेंगे. क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे बाय एन एक्सपेरिमेंट. तो इसको ध्यान से रखिएगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंड फैक्टर इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. Density of the liquid. Density of the liquid. So what we can say, the band force, directly proportional to the density of the liquid in which the object is immersed. Yes or no beta? Yes. Yes. So what we can say here, band force is directly proportional to the density of liquid. This is also directly proportional to the equation number 2, density of the liquid. And the third factor is acceleration due to Acceleration due to gravity. Say that the band force is directly proportional to the acceleration due to gravity. So what we can write, band force is directly proportional to acceleration due to gravity. Yes, this is the equation number 3. And the fourth one is temperature. अच्छा बताइए, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी, तो बैंड फोर्स पे क्या होगा बेटा? इफेक्ट होगा. टेम्परेचर इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज. When the temperature increases, then the band force Decreases. decreases, or we can say will decrease. So decreases or decreases. Band force decreases. So what is the pressure
what is the pressure at a depth of 10 centimeter in brine of density 1.5 gram per centimeter cube. Tell me the answer. Okay, what is the pressure at a depth of 10 centimeter in a brine of density 1.5 gram per centimeter cube? तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो हमें गिवन है बेटा वो क्या दी हुई है बताइए। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी गिवन है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा जी होता है ना। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो क्या क्या हो सकता है बताइए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सबसे पहले आप क्या करो किसमें कन्वर्ट करोगे बेटा ऐसे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करोगे यस और नो। यस ऐसे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा बताइए। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 किलोग्राम पर वेरी मीटर गुड क्यूब। मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1500 kg पर मीटर क्यूब। यस एंड एक्सेलरेशन और क्या दिया हुआ है बेटा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स टू से 0.1 मीटर। 0.1 मीटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो इसका मतलब आपको 9.8 यूज करना है। तो यूज करना है बेटा 9.8 यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है 10 तो आपको 10 यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ऑब्जेक्ट जो आपको हमारे पास में जो भी ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 अज्यूम करोगे या फिर 9.8 अज्यूम करोगे। ठीक है अभी यहाँ पर मैं चलो अभी यहाँ पर आप 10 ले लीजिए तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले लीजिए। अच्छा बताइए प्रेशर कितना होगा। प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच यस और नो। एम आई ऑडिबल यस है ना। तो देखिए P इज इक्वल टू रो जी एच होगा बेटा। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो कितना दिया हुआ है 1.1500 मल्टीप्लाइड बाय जी कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 0.1 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ 1500 पास्कल आया ना पास्कल। और वी कैन से इट इज P इज इक्वल टू 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया ना। यस सर समझ आई बात बेटा है ना। चलिए इसके अलावा इसके साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए हमने बायन फोर्स हमने देखा बेटा कि दैट बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी साइज ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेम्परेचर and density of the liquid or fluid in which the body is immersed. Yes, so Archimedes principle says that the weight of the liquid displaced by the body is equal to the buoyant force which is applied by the liquid on the body. Yes or no beta? So what we have when a body is immersed inside a liquid partially or completely, then what happens? It experiences a force which is in upward direction and we call it upthrust or we can call it the buoyant force. Then that buoyant force is equal to the weight of the liquid or fluid displaced by the body. Okay, so let's write the statement of the Archimedes principle also gives the mathematical expression for the buoyant force.
यस हमने जो बेटा बाइंड फोर्स का जो हमने भी बाइंड फोर्स उसके फैक्टर्स देखे डिपेंड किस पर करता है, तो वो किस किस कैसे उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे उसको बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तो वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। यस सो व्हाट वी हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हेन a body is immersed in a fluid in a fluid partially or completely, then what happens, it experiences an upthrust, or we can call it buoyant force. Yes or no Yes. beta, buoyant force, and that is equal to the buoyant force which is equal to the weight of the liquid, weight of the liquid, or we can say it is weight of the liquid or fluid. चलिए हमने अगर fluid यूज किया तो fluid हम लिखते हैं, weight of the fluid displaced by the body, displaced by the, okay. So let's prove the Archimedes principle, that how we can calculate the buoyant force by using the weight of the fluid displaced by the body. Yes बेटा, तो देखिए सिंपल सा हमारे पास में इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे पास में कोई भी बॉडी है पर्सन है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई भी यहाँ पर फ्लूइड हुआ, ठीक है, फ्लूइड में क्या होगा बेटा, किसी भी बॉडी को हमने लिक्विड प्लेस किया, अब बॉडी जो हो सकती है या तो कंप्लीटली इमर्स हो सकती है बेटा और पार्शियली हो सकती है, ठीक है। सपोज हमारे पास में क्या है, यहाँ पर कोई भी एक बॉडी है जो इस तरह से है, क्या है बेटा, ये क्यूब है, यस और नो, Yes. क्यूब और यू कैन आल्सो से क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पार्शियली इसका कुछ वॉल्यूम जो है बेटा वो बाहर की तरफ है और कुछ वॉल्यूम कहाँ पर होगा, अंदर होगा, बट इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा बेटा वो तो क्या होगा, फिक्स रहेगा। द वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड एंड आउट इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। Yes. बट क्या होगा कि जब ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड होगा और कंप्लीटली आउटसाइड द लिक्विड होगा, ठीक है, उस केस में इस पर जो अपथ्रस्ट लगेगा बेटा वो क्या डाउनवर्ड से लगेगा, देखिए इसे आया ना, जो फ्लूइड यहाँ पर होगा, अगर ये बॉडी कंप्लीटली होगी तो ऊपर से भी लगेगा और नीचे से भी लगेगा। यस अगर बॉडी हमारे पास देखिए कंप्लीटली अगर इमर्स होती है, देखिए इस तरह से होगी, तो यहाँ पर देखो लिक्विड ऊपर से भी फोर्स लगाएगा प्रेशर, और लिक्विड यहाँ से भी प्रेशर लगाएगा, यस और नो, Yes, sir. यस। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, by using which we can calculate the buoyant force applicable on an object or a body which is immersed inside the liquid or partially complete, yes or no. Okay, proof of the Archimedes principle, and in this proof what we have, in which we have that a body or a vessel having a liquid of density, a vessel having the liquid of density rho. Suppose we have a liquid which is stored in a vessel like this, and the density of rho is taken, density of fluid is rho. Taken as rho. Okay, we can set rho, and also we have a cylindrical vessel, a cylindrical body which is immersed inside the liquid. Yes, a cylindrical body or cylindrical vessel
which is immersed inside the liquid, which is insert inside the liquid, having a cross section area. See, this is a cylindrical body which is placed inside the liquid like this. Yes or no? So what we have, the height of the liquid from the upper face of the body. Upper face of the body is h1. Yes, and the height of the lower face of the body is H2. h2. Very good. So this height is taken h2. Okay, and the cross section of the area, which is circular in nature, is considered area of cross section is considered A. Understood? Yes, sir. Sir, can you Yes. repeat this cross-section So, area of okay, cross-section? a cylindrical body which is immersed inside the liquid of density rho, having the cross section area a capital A, and the height of the liquid from the upper face of the body. This is the upper face of the body, Yes, and sir, this is the lower face of the body. Yes. Yes, lower face of the body, and the height of the liquid from the lower face of the body is h2. Yes or no? H2. So what we can write here, so density is rho. So what we can write, what we have done in this experiment, first of all, consider a cylindrical body of cross-sectional area capital A is immersed in a liquid of density rho. Okay, now what we have in next statement, let what we have, the height of liquid column, height of the liquid from upper surface of body is h1, and height of the liquid from lower surface of the body is h2. Yes or no बेटा? Understood? बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं बेटा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हमको यूज नहीं करनी है. ठीक है, जो हमने अज्यूम किया है, फर्स्ट वी हैव कंसीडर्ड दैट अ सिलिंड्रिकल बॉडी इज submerged or immersed inside a liquid of density rho. Then secondly, what we have considered, that let the height of the liquid from the upper surface of the body is h1, and the height of the liquid from the lower surface of the body is h2. So what next? Let's consider that the pressure exerted by the liquid on the upper surface of the body, can be right? Yes, the pressure exerted by the liquid on the upper surface of the body will be is equal to this. Yes or no? The pressure is P1. Yes or no? And the pressure exerted by the liquid on the lower surface of the body will be P2. Yes or no beta?
Yes. Yes or Yes, no? sir. And due to that pressure, the force exerted on the body, the force exerted on the body will be is equal to will be is equal to the force on the body will be is equal to, suppose here F1 and the force exerted by the liquid on the lower face will be F2. F2. Yes or no? So what we Yes, have, sir. so what we can write here, the pressure exerted by the liquid on the upper surface of the body, upper surface of the body is given by P1. P1. Yes or no, beta? P1. P1, and P1 is equal to, we can write rho G H1. Yes or no, beta? Rho G H1. Yes or no? Yes, sir. Yes. Sir. Okay, beta. Next, Okay, what we sir. have, so what we can say, the force exerted on the upper surface of the body will be is equal to F1. Yes. So what we can write, the down thrust on the upper surface of the body, is given by F1. Yes or no, beta? Is given by F1, and F1 is equal to P1 multiplied by area of cross section. यस, हमने पढ़ा है बेटा कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, होता है नहीं होता है? तो वहां से बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं. यस और नो? एज वी ऑलरेडी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. Yes. Yes, Yes, sir. so we can write by multiplying this here. So we can write force is equal to pressure into area. So what we can write here, that F1 is equal to P1 is equal to rho G H1 multiplied by A. Yes or no? Mark this equation 1. Now what we can write for the next surface, for the lower surface. Yes, for the lower surface, what we can write, the pressure exerted by the liquid on the lower surface of the body is given by, what we can write, P2. P2 is equal to rho G H2. Yes. 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 Yes, sir. So for what we can write, so the upthrust on the lower surface of the body is given by, what we can write, F2 is equal to P2 multiplied by area of cross section. Yes. Yes. Okay, now what we can write, F2 is equal to, pressure is given by rho G H2, so rho G H2 multiplied by A, and this is the equation number 2. Yes or no? So we have calculated that the force on the body from the upward and from the downward. Yes or no?
at the upper surface of the body, the force is in downward direction, so it is called down thrust, and the force on the lower surface of the body is acting in upward direction, so it is called up thrust. Yes. Yes. So Yes. can we write the net force exerted by the liquid on the body is equal to F2 minus F1? As we know that the pressure exerted by the liquid depends on the height of the liquid column, and here we can see that height of H2 is greater than H1. So the force F2 will be more than the force F1. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Now what we can write, the resultant force or we can say it is upthrust on the body is given by F is equal to F2 minus F1. So what we can write, F is equal to F2 is rho G H2 multiplied by A. Yes or no? Yes. From equation Yes. second. And F1 is equal to rho G H2 Rho G H2 rho G H1 multiplied by A. H2 होगा कि H1 होगा बेटा F1 के लिए? sorry sir, H1 H1 होगा बेटा. Okay. Now can we take common something? Yes, sir. Yes. Rho What we G can, and A. rho G and A. Then what we GH. can write, H2 minus H1. H2 minus H1. Yes or no? H2 minus H1, and here you can see that H2 minus H1 is the height of the body. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes, sir. And it is considered as small h. Yes or no? So what we can write, F is equal to rho G A into H. Yes, sir. Yes, sir. Yes, beta. Understood? Yes or no? Okay. Yes. Now, what we know, since the volume of the cylinder is equal to, Sir, A multiplied by H, small h. Sir, A multiplied by multiplied by small h. Yes or no, beta? Yes. And give the equation number 3rd, and this is the equation number 4. Okay. Now what we can write? From equation number 3rd and 4th, what we can write, that F is equal to rho G into capital V. Yes or no, beta? Yes, sir. yes, sir. Yes. And in this formula, what we can say, the force exerted by the liquid on the body is equal to the volume of the body multiplied by the density of the liquid multiplied by the acceleration due to gravity. So what we can Yes. say, the force exerted by the liquid on the body is equal to product of volume of the body and density of the liquid, Yes. and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Yes. Yes, and this force is called
buoyant force. Buoyant force. So sometimes we call it FB is equal to rho G multiplied by. Now, what we can say, you can say, see here that the density of the liquid is rho, okay, and volume of the body is V, and acceleration due to gravity is G. Yes or no? So Yes. we can say that density into volume. We already know that density is equal to mass upon volume. Yes or no, beta? Yes, sir. Mass Yes, upon sir. volume. So we can Yes. say that mass is equal to density into volume. Yes, sir. Yes or Yes, no? sir. So here we are using the density of the liquid. Here we are using the density of the liquid. So what we can write that FB is equal to, यहाँ पर क्या होगा अपना density of the liquid multiplied by volume into G, and we can call it here rho L multiplied by V is equal to the mass of the liquid. Yes, sir. Yes. So what we can write, buoyant force is equal to the mass of the liquid multiplied by G, and mass into acceleration due to gravity is equal to Weight. weight of which? Weight of what? Weight of the body. Weight of the liquid, beta. We are using liquid here. Yes, because density is the considered as liquid. Density of liquid is considered rho. Yes or no? Yes. So what we can say, weight of the liquid displaced by the body. Yes or no, beta? Displaced Okay. by the body. Yes or no? But एक doubt था sir, V जो था that was the volume of the body, Yes. density. Yes, बेटा. देखिए V अच्छा यहाँ अच्छा पर बेटा देखो वॉल्यूम जो है बॉडी का है, ठीक है. वॉल्यूम हमारे पास में क्या होगा, बॉडी का है, बट हम डेंसिटी किसकी यूज कर रहे हैं बेटा, लिक्विड की यूज कर रहे हैं. देन व्हेन यू मल्टीप्लाई द वॉल्यूम विद डेंसिटी, देन व्हाट यू गॉट? हाँ sir, the mass of the liquid which will be in the place of that body if the body will not be there. ओके That means Okay. वो body जितनी मास को डिस्प्लेस करेगी वो उसका वेट के बराबर. हाँ sir.